Anita, now. Turn. Guru. Slowly. আস্তে এগিয়ে এসো। স্লো স্লো। এবার কাজটাকে ধরো। Gently. তোমার গ্রাম, তোমার সংসার, তোমার সুখের সংসার, তোমার বাচ্চা। এই ভয়ঙ্কর আকালেও হয়তো তোমার বাচ্চাটা বাঁচত, কিন্তু তার আগেই তোমার স্বামীটাকে সেটা। Well, Smita was my second child. In fact, Anita was born in 1949. It was after almost 6 years lapse that she came. The first reaction when I saw her was, as you know, Anita is quite fair. She has taken her mother's color. But Smita, for my delight, was like me. First time I saw her, which was on Bombay television, reading the news. Now what I noticed about her was that she was entirely focused. Now this was very important. And she was a news reader, but when she used to read the news, it seemed like she was talking to just you as an individual. She was extremely focused. मेरी बात सुनना बाशाना और ला ये भी सारा खत्म हो गया। ये ले, इसमें से पी ले। अरे सुअर के पिल्ले, जा किसी और को पिला। अरे जाना जाना तो मक्का ऐसा है वो, उसका मुंह मत लगना। अरे तू चुप कर साला, तुम सब मरद जात एक ही जैसा साला, हराम जादा साला। People say I look ugly. I don't look glamorous enough. What is this glamour they talk of? I don't know. All I know is that this accusation is constantly thrown at me. Please ask them to change this line. कोई है? बेटे, तुम्हारा बाप घर पे है? बाप अइया है, मेरे को क्या चाहिए? तुम्हारा आदमी घर पे है? अरे तमे हो कौन? मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया हूँ। तुम्हारे पास जमीन है या सिर्फ दूध बेचने से सारा काम चल जाता है तुम्हारा? वो बच्चा काम करो वाला आके गया, तो मेरे को क्या चाहिए? इस दूध से थोड़ा सा नमूना ले सकता हूँ? इस दूध का थोड़ा सा नमूना ले सकता हूँ? नमूना वमूना कुछ नहीं। हेलो, गांव के सब लोगों ने दिया है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ले लूंगा। थोड़ा सा? अरे थोड़ा थोड़ा करके पूरा भगोना ले लोगे। हेलो हेलो, I suppose I'm as independent as I can be because of my background and upbringing. There was so much Gandhiwad in my childhood. Non-violence. Turn the other cheek to someone who hits you. Be honest and upright. That's how I was brought up. And here I find myself in this industry. What was special about what Smita played and what she was she was very real.
she was tangible. She was there. You could touch, feel, sense. I mean, it wasn't about acting. It was about herself playing that person. I mean, it was herself being real at that point of time, because she herself, went into every situation and she was not afraid. I don't have to tell anybody how great she was as an actress. She was great in every possible manner. And when I put her in a very important role of an actress in my film, Akale Shandane, which is a film within a film, and I thought that she would be the right person to do that. And she would play a Bengali. And for that matter, I always find her to be extraordinarily ordinary in everywhere. জানো যখন চুপ করে থাকো। কলকাতার কন্ট্রাক্টর বাবুদের কাছে তুই গিয়েছিলি কি? গিয়েছিলি কিনা? হ্যাঁ কিনা বল। কি? হ্যাঁ। হারামজাদি, এই আকালের দিনে সব ভাঙে, তোর গত ভাঙে না কেন? কলকাতার কন্ট্রাক্টর বাবুদের কাছে যাওয়ার আগে তুই গড়ে তুলছিস না কেন? আমি রাখবো না। But when the relationship between Raj Babbar and Smita grew, firstly we had some apprehension whether what kind of relation could it be, because of the fact that Mr. Babbar was a married man. We were particularly worried, particularly Mrs. Patil, that she was a champion of women's rights, and she thought that because this particular relationship was developing with a married man, a marriage still intact, it would be basically and morally wrong to have that kind of relationship. कितना विशाल है साजन। कैसा लगा बम्बई शहर? बहुत अच्छा, लेकिन एक खराबी है। क्या? यहाँ की लड़कियाँ शादी के लिए इंतजार बहुत कराती हैं। और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम तो जानते ही हो, पापा रिटायर होने वाले हैं। मम्मी पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, और वो बम्बई नहीं छोड़ सकते। सारी प्रॉपर्टी यही है, देखभाल तो करनी ही पड़ेगी ना। हुजूर, इसीलिए तो आपका हुक्म पाते ही बंदा अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ चला आया। अब किस बात की देरी? आपके हुक्म की। Smita also had a dream. It was middle class dream, yeah, about being wife, being mother. And she was successful. She did her films, but yet that dream remained with the little girl. And she was always on the lookout for a perfect mate, a perfect companion. And when she did find, suddenly she found herself in a totally different situation. You see, what had happened was, because of the role she had played, she had become a kind of a role model, an icon. And she represented very strong women, and in fact she was a representative of so many women. She was the voice of so many women. And at one point she realized that when she fell in love, now love is something that you don't know who you're going to fall in love. It happens when it happens, and then everything goes haywire. I cannot handle men very well. I can't manipulate conversation or be charming. I'm cautious about getting into relationships. There's such a distinct line between men and women, especially in this industry, that you have to be constantly alert. You have to keep your distance, or you'll be bogged down by scandal mongering. I'm extremely confused by this, and I'm afraid it shows on my face at times. आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। और बारिश का शॉट उसने जब दिया, तब घर आके मेरे गले पड़ी और बहुत रोई। तो मुझे क्या लगा कि शूटिंग से कुछ तो भी हो गया कम ज्यादा। तो मैंने उसको पूछा, क्यों तू रो रही है इतनी? तो मुझे बोली, माँ मुझे तो पैसे का मोह नहीं, मैं पैसे के लिए तो फिल्म में आई ही नहीं है, तो मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों मैं कर रही हूँ, ये जो कृत्रिम है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे मन नहीं है मेरा, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। हमने शादी कर ली है।
तुम और विजय यानी दोनों तुम, नाम क्या है तुम्हारा? रोमा। रोमा? नहीं नहीं, बस बस जीती रहो, सुखी रहो। अजीब बेवकूफ लड़की हो, इतनी देर चाय बाएं शाएं हाँकती चली जा रही हो। सास कहती क्यों नहीं कि तुम ये इस घर की बहू हो? But she chooses to leave, as did Ibsen's Nora. In fact, it is a terrible moment when the woman is at her most vulnerable. You can leave one man for another, but to relinquish all security and embark alone on a quest unknown requires great strength. But she sets out with quiet confidence in her own inner resources. The real loss is that of Prati. I remember on that day, Sunil Dutt trying to say, and he said that I feel that the real loss is the child who is going to be motherless. And I think it was a greater loss for Smita because she wanted to be a mother. There are many things she did because of her absolute urgent desire to be a mother. And unfortunately, she could not look after his child, she could not grow him, and Pratik is without mother. The only factor is that Mrs. Patil is trying to do her best, Vidya is trying to do her best. Though she is grandmother, I think she has been his mother. वैसे तो काफी यादें हैं, लेकिन तो भी वो कुछ 3.5 साल की थी, सबकी याद बहुत है, क्योंकि मने होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा जल्दी केजी क्लास में भेजा। उसकी इच्छा नहीं थी, वो बहुत कोशिश करना पड़ती थी उसको क्लास में भेजने के लिए। जब घर आती थी तब मुझे बोलती थी कि माँ, तेरा हॉस्पिटल गिरा दे और ये मेरे स्कूल की इमारत गिर, जैसे हम दोनों इकट्ठा रहेंगे, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। ये बहुत छोटी सी याद है, लेकिन मैं आज तक वो भूल नहीं पाती। कितनी चाहत थी तुझे सागर किनारे घर लेने की। 7 बरस गवाए तूने मन चाहा घर खोजने में। आज बरसाती हवा में तुझे सामने पसरे अफाट समुद्र के लहरों का तांडव देखने का था। ऐसी घनघोर बारिश में तो तेरे तन का कण कण नाचने लगता। तू माँ है, आज यह भूलकर अपने बच्चों को बाहों में भरकर इस बरसात में तू खुद को खो जाती। ज्वार के समय किनारे को लपकती प्रचंड लहरों का नाचना तू तनमन से लेती। अपनी मिट्टी, अपनी प्रकृति से कितना प्यार था तुझे। जब तेरी दीदी ने तुझे डिलीवरी के लिए अमेरिका बुलाया तो तूने कहा कि मेरा बच्चा मेरे देश की मिट्टी में ही जन्म लेगा। क्या इस माटी प्रेम की वजह से ही तूने धरती की गोद में जाने की इतनी जल्दी थी? सचमुच स्मित, आज तुझे होना ही चाहिए था।